HDFC, जी हाँ, कंपनी के नंबर्स आए और अगर आप देखिए तो बढ़िया नंबर्स रहे इस क्वार्टर में। स्टैंड अलोन मुनाफा 4,450 करोड़ आया, अनुमान से बेहतर। स्टैंड अलोन मुनाफा अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ देखी गई है। इवन NII की बात करें तो 4,005 करोड़ से बढ़कर 4,580 करोड़ के करीब आया, अगर ईयर ऑन ईयर पैरामीटर पर हम इसको देखते हैं। Q2 में AUMs ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़, रादर 7 लाख करोड़ आई है, विच यूज टू बी 6 लाख करोड़। तो क्लियरली यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखी गई। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 22.5% Q2 में, सालाना आधार पर क्रेडिट लागत 0.29%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। बट चलते हैं सीधे, अभी इस वक्त हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड CEO मिस्टर केकी मिस्ट्री जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बढ़िया नंबर्स आए सर, कैसे डिफाइन करते हैं इस क्वार्टर को इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ, कलेक्शन एफिशिएंसी एटसेट्रा? तो हमारे हिसाब से तो ये क्वार्टर बहुत अच्छा था। जो मोमेंटम जो हाउसिंग के लिए आई थी, एंड दैट मोमेंटम स्टार्टेड कमिंग समटाइम इन अक्टूबर ऑफ 2020, तो 2 साल हो गए कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर के दैट मोमेंटम कीप्स माउंटिंग। अभी 2017, 18, 19 वो 3 साल में व्हाट वी सॉ वाज के टियर 1 सिटीज मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, उसमें थोड़ा स्लो डाउन था, डिमांड का स्लो डाउन था। पर जो टियर 2, टियर 3 टाउन्स थे वहां पे डिमांड स्ट्रांग रही थी। Post 2020, what we are seeing is that tier 2, tier 3 towns continue to grow at the same pace as before, but tier 1 towns जो एकदम slow down हो गए थे 2017, 18, 19 में, that has started seeing a momentum growth. तो काफी growth आ रही है from the tier 1 cities. हमारी जो एवरेज लोन साइज है वो लास्ट ईयर 31.3 lakhs थी, ये साल 35.7 lakhs है। तो एवरेज लोन साइज बढ़ने का मतलब है कि सिटीज में से अभी ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। एज अ कंपोनेंट ऑफ आवर टोटल लेंडिंग, सिटीज इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन व्हाट इट यूज्ड टू अ ईयर। वंडरफुल। सो दिस इज ऑफ कोर्स द हाईलाइट, जैसे आपने बताया, तो बहुत बढ़िया रहा क्वार्टर। आपने एक्शन एफिशिएंसी के बारे में जी पूछा। जी। एक्शन एफिशिएंसी इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। ये क्वार्टर में कलेक्शन एफिशिएंसी वाज बेटर in some respect compared to what it used to be pre-COVID. 99% cumulative collection efficiency हमने देखी है सर ये क्वार्टर में इंडिविजुअल लोन्स के लिए। 99% प्लस क्यूमुलेटिव मतलब आपका जो समझ लो कि लास्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट भी आउटस्टैंडिंग है, आपका 2 इंस्टॉलमेंट रिकवर करना है, तो बेस में दो इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे। ओके, NIM सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कैसे पैन आउट हुए इस क्वार्टर में और आउटलुक वहां पर कैसा है? तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाज 3.4%। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ वाज अबाउट 13%। अभी इसमें क्या है, हमने पहले भी बताया टीवी पे कि व्हेन इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज इन द सिस्टम, व्हेन RBI इंक्रीजेस द रेपो रेट, हमारी बोरोइंग्स की कॉस्ट इमीडिएटली बढ़ जाती है। अगर RBI ने रिड्यूस किया रेट तो हमारी बोरोइंग कॉस्ट तुरंत रिड्यूस हो जाएगी, बढ़ाया तो हमारा कॉस्ट तुरंत बढ़ जाएगा। बट लेंडिंग रेट्स में हमारा जो इंडिविजुअल लोन्स के साथ जो अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट के मुताबिक वी कैन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स ऑफ एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स बिकम्स इफेक्टिव वंस इन 3 months, और 3 months स्टार्ट फ्रॉम द मंथ इन विच यू टुक अ लोन। तो अगर आपने जनवरी महीने में लोन लिए तो आपकी रेट बढ़ सकती है जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में या अक्टूबर में। अगर आपने फरवरी में लोन ली है तो आपकी रेट बढ़ सकती है फरवरी में, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो एवरी 3 months। नाउ लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि RBI ने क्वाइट एग्रेसिवली रेट्स बढ़ाए थे। नाउ व्हेन RBI इंक्रीज रेट्स, कॉस्ट तो इमीडिएटली बढ़ गई। Lending rates increase over a period of 3 months. So roughly there is a 1.5 month lag, transmission lag, between the time rates change in the system and we get the benefit or the impact of the rate comes on the lending side. So net interest income growth was 13%. अगर आप ये transmission gap का effect निकाल दें, then the net interest income growth would have been 16%, which is in line with the overall AUM. AUM growth इंडिविजुअल के लिए 20% था, but non-individuals में सिर्फ it was only 1%. So overall AUM growth was 16%. NII growth after removing the transmission effect was a similar 16%. Sure, sir. Fair enough, and that's a good and valid explanation कि कैसे ये देखना चाहिए हमें। जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है सर, इसका लोन पोर्टफोलियो पे आपके हिसाब से अभी तक तो ज्यादा असर शायद नहीं हुआ है, बट कब आपको लगता है ये पिंच करने लगेगा लोगों को और ये दिक्कत की बात हो जाएगी? देखिए ऐसी बात है कि अगर आप हाउसिंग लोन कंपेयर करें विद अ पर्सनल लोन,
अगर आपको घर के लिए कुछ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपको 15 महीने के लोन देंगे। बैंक विल गिव यू 12 मंथ और 15 मंथ लोन। हाउसिंग लोन के लिए अगर आप बैंक में गए तो आपको बैंक 15 साल की लोन देगी, बराबर। अभी 15 मंथ की लोन के लिए यू विल वांट टू बोरो मनी ओनली एट अ टाइम व्हेन रेट्स आर लो, क्योंकि 15 मंथ्स में तो कुछ, अगर आज रेट्स हाई है तो 15 मंथ में तो कुछ रेट कम नहीं होने वाली है। So you will want to borrow money at a time when rates are at the lowest. But housing loan is a 15-year loan. 15 year के अंदर rates will go up, rates will go down, rates will go back up and go down again. So where rates are at the point of time when you take a loan may have a sentimental effect on a customer, but economically कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, because आज कोई भी fixed rate loan नहीं देते हैं. Everyone gives floating rate loan. फ्लोटिंग रेट लोन में आज रेट हाई है, कल कम हो जाएगा, आज कम है, कल हाई हो जाएगा. सो इट ऑल सॉर्ट ऑफ इवन्स आउट. बट सेंटिमेंटली यस, देयर इज सम इम्पैक्ट ऑन मार्जिनल कस्टमर्स. इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट सर. आई नो सेंटिमेंटली इस पे ज्यादा असर, इकोनॉमिकली इतना फर्क नहीं पड़ता है. सर एक चीज हमने और देखी है, आपने शिफ्ट किया है क्वार्टरली रीसेट फॉर इंडिविजुअल लोन्स टू अ मंथली रीसेट, राइट? जिससे रिड्यूस हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेट चेंजेस. इसका सर बेनिफिट बेनिफिट को कोई किसी को भी बेनिफिट नहीं है. अगर रेट्स कम हो रहे हैं then the customer will benefit. If rates are going higher, then the customer pays the amount faster, the higher rate faster. Banks are doing it monthly. We were doing it quarterly. We will now do it monthly. But this monthly transmission is only for new loans. जो पहले की जो loans थी, वो that continues on a 3 monthly basis. Sure. We are not changing the agreement for old customers. Retrospective के लिए, not retrospective. Sure sir. Okay. ऑल्सो सर अभी जो फेस्टिवल सेल्स गए, लोन्स डिसबर्समेंट, वो क्या काफी इंकरेजिंग लगे आपको एज कम्पेयर टू पहले जो हमने देखा है? और आगे अब जो अगला साल और लास्ट क्वार्टर है, वो कैसा दिख रहा है सर इन टर्म्स ऑफ डिमांड इन दैट सेंस? फेस्टिवल टाइम में क्या होता है कि पीपल बाय अ हाउस इन एंटिसिपेशन ऑफ द फेस्टिवल. तो अगर दिवाली और दशहरा दोनों अक्टूबर महीने में है, पीपल विल वांट टू बुक देयर हाउस बिफोर सितंबर, not at the last moment, because October mein every people are traveling, people are going somewhere or the other. So what the growth that you are seeing in the loan book reflects the demand that would be there for a festival. हमारी जो अभी आप November, if you look at the month of November, today is the 3rd of November, 2 days have passed, but in those 2 days we've got a healthy number of new loan applications coming in. So notwithstanding the higher rate, so far the demand for housing is sustained even in November as we speak. Okay, fair enough. And quickly sir, एक सवाल आपसे. आपने कॉल में कहा कि merger will get over before expected timeline, sir. Merger के लिए the approvals that we were requiring for the process, those are underway. We are a financial conglomerate, not a housing finance company alone. तो हमारे तो काफी regulators है. We have RBI, we have NHB, we have pension regulator, we have IRDA, we have of course SEBI. तो इतने सारे regulators हैं, सबके in principle approvals आ गए. Then we have got the competition commission approval. Now NCLT has fixed 25th November as the date of the shareholder meeting. So hopefully shareholder meeting by the end of this month, shareholder approval भी आ जाएगी. Then there is a procedural, there is a certain procedure that we have to follow. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि हमारी म्यूचुअल फंड, वी हैव अ म्यूचुअल फंड. द म्यूचुअल फंड हैज मिलियंस ऑफ कस्टमर्स. तो हमें हर कस्टमर को लेटर लिखना पड़ेगा कि अभी जो म्यूचुअल फंड की जो प्रोमोटर है, दैट प्रोमोटर इज नाउ नॉट HDFC Ltd, इज HDFC बैंक. किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा. HDFC बैंक इज अ रेगुलेटेड बैंक, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा. बट ये प्रोसेस वी हैव टू फॉलो एंड गिव देम 30 days to respond. So ये सब प्रोसेसेस will still take some time. So my sense today, it can always change, is May June के करीबन हो जाना चाहिए. Okay, May June sir, we are also hoping ये completion यहाँ हो जाए. Finally sir, interest rate scenario जो अभी हम globally देख रहे हैं, उसका effect इंडिया पर भी देख रहे हैं. आपको क्या लगता है और कितनी हाइक होगी? आपने फेड के comments देखे, well factor in किया था 75 basis point, वो हुआ, but जो commentary आई वो थोड़ी सी और चिंता वाली है. अभी भी स्कोप है जहां बढ़ेंगे रेट्स, उसको हम कैसे समझे? और RBI की तरफ से आपको क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा? कि देखिए, मेरे हिसाब से पहले आप इंडिया की बात करें तो
कि RBI को थोड़ा बहुत तो Fed will have to take into account what the Fed does. They cannot totally ignore what the Fed does. इसका कारण सिंपल है, कारण मेनली करेंसी पे है. इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से खाली इतना फर्क पड़ेगा थोड़ा, पर इतना नहीं पड़ेगा. The bigger impact on increase in interest rates will be on the currency. हमारी rupee comes under pressure when the Fed increases rates, because then there is flight of capital from emerging markets into the US because US is offering a higher rate. समझ गए? तो इसके लिए रूपी पे प्रेशर आता है because dollars are going out of the country. अभी हमें कोई एक ऐसी मैकेनिज्म निकालनी चाहिए जिससे डॉलर्स कम बैक इनटू द कंट्री, whether it is NRI money coming back, whether it is through India's inclusion in the bond index or in some other fashion. अगर वो नहीं हो सके, then we have no option but to also increase interest rates to, induce or to let people come back and make debt investments in India. ये कारण है. कितनी और interest rates बढ़ेगी, difficult to say. I don't think it is so much for inflation because inflation we are having is imported inflation. Correct. Oil के लिए largely inflation है. Oil has roughly every $10 increase in oil prices has roughly a 0.35 to 0.40% impact on inflation. Correct, sir. So oil ये 9500 पे रहता है, it has an impact. But then what also has an impact on inflation is the exchange rate. क्योंकि अगर आप oil एक साल पहले जो import कर रहे थे, you were importing it at 76 rupees or 77 rupees to a dollar. आज आप import कर रहे हैं 82.5 rupees to, तो उसका भी inflation पे असर आता है. So combination of all of this, RBI cannot ignore Fed, but it does not have to do the same amount of interest rate increase that the Fed does. Fair enough. Our circumstances are very different. I must compliment RBI and government. I think उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है कोविड टाइम में. They did not go overboard in terms of printing notes and creating huge inflationary impact on the economy. We handled the economy extremely well, and that is the reason why we are getting the benefit today in terms of the growth in the economy.